it will still compile, it will still run, but it will actually not show up as a syntax error. लेकिन रन टाइम एरर ये होगा कि प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त वो एरर देगा while it's running, and we haven't seen any as of yet. ठीक है, okay, so let's kind of move on from runtime errors. What I want to talk about today is loops, and the idea, हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी बहुत शुरू में, and we said कि हमने कहा था कि प्रोग्राम बिल्ड करने के तीन हमें कंपोनेंट्स चाहिए. पहला कंपोनेंट है कि we have sequential statements, right? एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा statement. Then we said कि we had conditional statements. Last time हमने if else पे time spend किया था, and we said कि if else statement is equivalent to the sort of conditions that we talked about in Scratch, जिसके अंदर एक boolean condition check होगी. Boolean condition would be कि do we have sorry, let me go full screen on this one. Yeah, so we have a Boolean condition. In this case, x is less than y, या नहीं. And based on that, the code will go inside the block or not. So this was if else, and we said कि if else, we can give it an alternative flow. If the condition is true, do this, and if the condition is not true, do this, and that would be else ka block. And we also said कि there's a bunch of things that you could actually put in terms of Boolean conditions. X is equal to y, not equal to y, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, etc. And we said that we can even nest these conditions. So हम ये कह सकते हैं कि if the condition is true, do this. Otherwise, if a new condition is true, do this. Otherwise, if another condition is true, do this. And we said that you can nest all of them. You could collect multiple conditions. This is one way of doing it. There is another way of checking multiple conditions as well that hopefully we'll talk about briefly today, but we'll revisit that. Lekin essentially, circular braces के अंदर there is a Boolean condition. This will either be true or false. And based on that, the program will decide which part to do and which part not to do. And we said that there's a bunch of relational operators that we could kind of talk about. हमने ये एग्जांपल दिए थे कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं now. So the thing that I want to talk about today is at the start is something which is called you can actually combine some of these Boolean conditions. So they are called binary operators, and the idea is कि मैं एक condition check कर रहा हूँ. Value 1 is, let's look at the program कि ये करता क्या है. करता ये है कि I'm declaring 3 integers, right? And मैं इस प्रोग्राम में ये चेक कर रहा हूँ कि यूजर से मैं 2 इनपुट लूंगा और फिर मैं चेक करूंगा उसमें से लार्जर वैल्यू कौन सी है. मैंने 2 इनपुट्स ले लिए, एक को मैंने वैल्यू 1 में स्टोर कर दिया और एक को मैंने वैल्यू 2 में स्टोर कर दिया वेरिएबल्स में. एंड नाउ आई वांट टू सी व्हिच वन इज लार्जर. ठीक है, which if value 1 is larger, I'm going to assign that to a variable larger. And if value 2 is larger, I'm going to assign that to the variable larger. And then I'm just printing out the larger of the inputs is the one that I have assigned to larger. So this should work, but I want to show something else here. So you can actually combine these conditions. So let's say I want to see I want to check 2 things. So मैं देखना चाहता हूँ कि value actually ये नहीं करते, वो करते हैं जो हम कर रहे थे ना. We actually had a program just where we were checking whether the number was even or odd. वो check कर लेते हैं कि हम एक variable लेते हैं and we're dividing it by 2 and we are checking कि if this is equal to 0. ठीक है, हम इसका remainder check कर रहे हैं. If the remainder is 0, then we say the number is even, otherwise it's odd. ठीक है, and otherwise the number is odd. This is a easier program. Yes, logic. ये मैं remove कर देता हूँ. ठीक है, so now we are actually taking an integer from the user as an input, checking कि वो odd है कि नहीं है, and when we run this program, let's say 4,
उसने कहा the number is even. What if I want to add another condition here? Let's say I want to see if the number is greater than 10, less than 10 or not. So let's say my program wants to tell me if a number is even and less than 10. ठीक है, पहले तो खाली ये था ना कि even है कि नहीं. So how do I do this? So the way to do this AND operation is like this कि आप दो ANDs लिखते हैं and now you can give another condition. So now I'm going to say is less than or equal to 10. इसका क्या मतलब है? This is actually going to evaluate as either true or false. लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो कि इंग्लिश में इसका मतलब आपको लग रहा है. एंड द आइडिया इज कि पहले ये इवैल्यूएट होगा, ये वाला पार्ट. सो दिस पार्ट विल बी इवैल्यूएटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट. लेकिन सो इस कंडीशन की एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू होगी एंड इस कंडीशन की भी एक अलग ट्रू और फॉल्स वैल्यू होगी. ठीक है. इफ दिस इज ट्रू एंड this is true, only then the program will go here. अगर दोनों में से एक true है तो the program will not go here, it will actually go there. So हम लिख लेते हैं, we'll say the number is even and less than 10. ठीक है. And in this case, if that condition is not true, it could mean one of two things. Either the number is not even or it's greater than 10. राइट. सो ये हम प्रोग्राम चला के देखते हैं, मैं उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा. सो देखें, अगर मैं इसको 12 देता हूं तो क्या होगा? दिस इज अ नंबर, दिस इज एन इवन नंबर. इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन द वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 10. इसका मतलब है ये फॉल्स हो जाएगा. सो ये दोनों चीजें ट्रू नहीं होंगी, देयरफॉर दिस एंड दिस विल नॉट बी ट्रू एंड वी शुड गेट द प्रॉम्प्ट either the number is odd or it's greater than 10. जी, क्वेश्चन. अच्छा, हमारा जो एंड है ना, एंड का सिंटैक्स सी प्लस प्लस में दो एंड्स है. दिस इज कॉल्ड एन एंड ऑपरेशन. ठीक है, दिस वन. सो whenever I want to compare, whenever I want to check two conditions, the way to do this is by giving one condition, condition 1 and condition 2, and these will be checked independently. और फिर उन दोनों का एक एंड ऑपरेशन होगा, जो कि एंड ऑपरेशन एग्जैक्टली वही है जो कि इंग्लिश में है. इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, ओनली देन द प्रोग्राम विल कम हियर. वो हम ट्राई करके देख लेते हैं. हम दोबारा इसको करते हैं और इस दफा हम अगर इसको 4 देंगे. जी हमजा, एक सेकंड, हम इसको 4 देंगे तो वो कहेगा द नंबर इज इवन एंड इज लेस देन 10, क्योंकि उसने दोनों कंडीशंस चेक की. जी, क्वेश्चन. सर मैं वही पूछ रहा था कि आपने बोला था जो सेकंड कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बट साइन आपने लेस देन इक्वल्स टू का लगाया था, तो उसी में कंफ्यूजन हो रही थी. नहीं, वो मैं इसलिए लगाया था ना कि अगर ये ट्रू, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दिस प्रोग्राम विल चेक इफ अ नंबर इज इवन एंड लेस देन 10. इसका मतलब है कि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब नंबर 10 से नीचे होगा, 10 के बराबर होगा या नीचे होगा. ठीक है. And only then will it come to this line, to line 23. Otherwise, it will go directly to line 24 when either of the two is not true. जब ये ट्रू ना हो या ये ट्रू ना हो या दोनों ट्रू ना हो, वो इधर आ जाएगा. So for instance, if I give a value 5, इसका मतलब है कि पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है और दूसरी तो मीनिंगलेस हो जाती है, राइट? Because both need to be true. It's either odd or it's greater than 10. अगर एंड की जगह ऑड लगा होता फिर वो आइदर कंडीशंस आते अगली चीज वही करनी है. जी हमजा, क्वेश्चन. सॉरी हमजा, आप ही थे. यस सर, हो गया. जी जी. सो एसेंशियली आयशा, हम सीन कर रहे हैं लेकिन हम एक इंटीजर सीन कर रहे हैं. सो देखें हमने क्या किया था. वी हैव डिक्लेयर्ड एन इंटीजर and we are asking the user to fill a value in that int, right? So यहां मैंने उसको बता दिया कि एक इंटीजर आएगा और यहां मैंने यूजर को कहा एक इंटीजर एंटर करें. ठीक है. So yeah, we have declared an integer and we are getting the user to input that integer in line 18. तो जो भी वो एंटर करेगा वो वैल्यू 1 में जाके स्टोर हो जाएगा. देन लाइन 22 पे हम चेकिंग कि वो इवन है या
इवन है और 10 से कम है तो वो कहेगा द नंबर इज इवन एंड लेस देन 10. ठीक. So this is the AND operation. The other so what if I want to say okay, I want to print if a number is even or sorry question. Okay, if the number is even or it's so essentially or का जो operation है ना it's two vertical lines. So the way OR works is you have these two lines. जब आपने OR करना होता है ना, so if I want to check either this or that, तो मुझे दो vertical lines लगानी पड़ेंगी, and the program will now treat this as an OR. So what do I want? I want this thing to, if a number is even or greater than 10. Let's say I want to check this new condition. Greater than 50 कर लेते हैं. So what will happen is okay, when the program comes here, ये condition check करेगी if the number is even or the number is greater than 50. Only then it will go inside here. This actually reads just like English. The only thing is और की जगह हमने ये दो vertical lines लगा दी हैं. या ये true हो या ये true हो, वो आ जाएगा और आके कहेगा even है or greater than 50. So या पहली कंडीशन ट्रू होगी या दूसरी, या जी मोमेन एक सेकंड, या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी. दोनों सूरतों में वो लाइन 24 पे आएगा. लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर वो यहां आएगा. इसका मतलब है जब वो यहां आएगा दिस कुड मीन ओनली वन थिंग. एक तो ये कि द नंबर इज डेफिनेटली ऑड, ठीक, और it's less than 50. क्योंकि अगर ये एक्चुअली ऑड पे इधर आएगा, एक सेकंड, नहीं क्या कंडीशन होगी, ऑड एंड लेस देन 50. सो जी मोमिन क्वेश्चन. आपकी आवाज नहीं आ रही मोमिन. मोमिन आई कांट हियर यू. सर कैन यू हियर मी नाउ? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमने आई कांट हियर यू. लो जी सर सॉरी मेरी आवाज ब्रेक कर रही है. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने इस तरह कंबाइन करना हो, जैसे इस केस में हमने लिखा हुआ है वैल्यू 1 को इवन वाली कंडीशन के साथ और ग्रेटर देन 50 के साथ इसको किया हुआ है, हमने टेस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन विद सम अदर कंडीशन करना हो कि इट कैन बी ईदर ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई एक चीज हो और उसके साथ कोई और चीज हो, तो उसको हम you keep on appending. It's the same idea. So I could say कि I could actually combine each of them, लेकिन इस पे 2 सेकंड वेट कर लें. लेकिन you can sort of add, you can say value 1 is greater than 50. हमने चेक कर लिया है, greater than 50 and less than 100. So you can sort of keep on combining. होगा ये कि वो जो कुछ भी इन curly braces में होगा उस पूरे को evaluate करेगा whether it's true or false, and then it will decide कि अगले वाले ब्लॉक में जाना है कि else वाले ब्लॉक में जाना है. You could combine a whole bunch of these things. ठीक है. तो ये पूरी की पूरी evaluate होगी as a condition and then it will actually go. So इस केस में it will only go into line 24 if the number is either even or the number is greater than 50. ठीक है. सो इसका मतलब है कि अगर ऑड नंबर होगा ग्रेटर देन 50 तब भी इसी में आएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी. लेकिन ये वाली हर सूरत में ऑड और एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 50, राइट. सो ये हम ट्राई करते हैं. लेट्स से हम इसके अंदर एंटर करते हैं 2. अगर हम 2 करते हैं तो जब वो यहां आएगा पहली कंडीशन यस हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लाइन 24 पे आएगा और वो कहेगा नंबर इज इवन और ग्रेटर देन 50. ठीक है. हम इसको दोबारा रन करते हैं. इस दफा हम इसको देते हैं 55. अच्छा 55 में क्या होगा कि वो यहां आएगा, नंबर इज ऑब्वियसली नॉट इवन बिकॉज रिमाइंडर 1 होगा, तो दिस पार्ट विल नॉट बी ट्रू
लेकिन this part will be true, therefore it will again go into line 24 and tell you कि भाई the number is even or greater than 50. And you could sort of try all possible things. So I could say 45. ये actually मैंने गलत लिखा है, odd number. This is an odd number. It is definitely not greater than 50. So the point is that you can actually combine a whole bunch of conditions using either and or. And का क्या हमने ऑपरेशन कहा था? हमने कहा था कि you can do दो and और का था ये. Actually you can check something else as well. What if you want to check if something is not equal to 10? ठीक है? The way to do this is not equal to 10. So the way to do this is कि मैं value 1 को कहूँगा, मैं होगा. What if I want to see कि value is equal to 10? The way to do this is equal to 10. तो ये तो check कर रहा है कि मेरा variable 10 है. The way to see कि if it's not 10 is just exclamation mark equal to. This is called not equal to. When I run this, this is going to wait, and if I say 11, it's going to say the number is not equal to 10. And otherwise, if the number is equal to 10, it will just do nothing. And so if I run the program and give the input 10, that means कि जब वो line 22 पे आएगा, this means that the number is equal to 10, therefore it will go directly to line 26 and do nothing at that point. हसन, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया क्योंकि can you repeat that? सर वो आपने बीच में एंड वाला एक डाला था, ये पिछला वाला एक एग्जांपल थी कि उसमें और करके वो था, फिर आपने कैन भी डाला था बिल्कुल राइट पर, ये वैल्यू 50 और एंड करके, मतलब कि ये पूरे अलग ब्रैकेट्स होंगे क्योंकि पूरा एक कंडीशन सेपरेट होगा. अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स मैंने डाले थे ना, ये आपकी क्लैरिटी के लिए था. अगर आप ब्रैकेट्स डालेंगे तो जब मैंने ये किया था ना, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर भी प्रेसिडेंस के रूल्स अप्लाई होते हैं. जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट होगा वो पहले इवैल्यूएट होगा, ये पहले इवैल्यूएट होएगा और ये इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट होएगा. सो आई कैन एक्चुअली डू दिस and it will help clarify things for me. But as far as the compiler is concerned, this is one condition which will evaluate true or false. This is another condition which will evaluate true or false, and this is another condition that will evaluate true or false. Brackets or no brackets. ठीक है? तो मतलब कि यही है कि या 1 वाला होगा या 2 और 3 नहीं, तो फिर इसका मतलब है 2 और 3 होना ही होना चाहिए. नहीं, 2 और 3 true. सो ये मुझे एक्चुअली कंबाइन नहीं करनी चाहिए थी. सो अब होगा का वो एंड को प्रेफरेंस देगा, आइदर दिस इज ट्रू और द होल ऑफ दिस इज ट्रू. ठीक होगा, ठीक है. सो या ये ट्रू होगा या ये होगा, उस सूरत में इधर आएगा. लेकिन अभी फिलहाल इसको फिनेस करते हैं, 2 तक इसको रखते हैं. ये आपको जब हम असाइनमेंट देंगे ना, तो we'll actually get you to test out a lot of these things and you learn some of this by doing. लेकिन फिलहाल मैं खाली इंट्रोड्यूस ये कराना चाहता था कि अगर आपने कंबाइन करनी है कंडीशंस, यू नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस. सो द वे टू डू दिस इज द और ऑपरेशन एंड दिस इज द एंड ऑपरेशन. कि यू कैन एक्चुअली चेक कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 इज ट्रू और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इज ट्रू. एंड सिमिलरली नॉट इक्वल टू वाला जो है वो ये है, और इक्वल टू वाला तो आपको पता ही है कि हमें पता है कि ये इक्वालिटी का ऑपरेशन है. सो आई कैन कंबाइन अ होल बंच ऑफ दीज थिंग्स एंड आई कैन से कि आई कैन बिल्ड सॉर्ट ऑफ लार्जर कंडीशंस. सिंटैक्स वाइज इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक वंस वी गिव यू सम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स यू विल टेस्ट आउट सम ऑफ दीज कंडीशंस. मुझे रिमेंबर हमने पहली क्लास में एक एग्जांपल किया था कि इफ इट्स रेनिंग एंड इट्स डूइंग समथिंग एल्स देन डू समथिंग एल्स, राइट? That's the sort of condition that you can actually build. Okay, if you are female and you can fly and you're a superhero, you know, then you're a Superman. So वो जो conditions है ना, वो actually इनके combinations है. So you'd say if the first condition is true and the second condition is true and the third condition is true, to then do something, etc., etc. So you need to be careful जब आप if else conditions बना रहे होते हैं. You can cascade them, you can combine conditions, etc., etc. लेकिन जैसे जैसे हम programs और लिखेंगे, I think we'll get more practice and we'll kind of build some of these conditions. We can put one inside the other as well. लेकिन अरकम इस वक्त थोड़ा सा complicated हो जाएगा. फिलहाल इसको straightforward ही रखें. लेकिन then hopefully once we write programs, and we'll write several programs in class,
we'll get some practice and then we'll write several programs and assignments, we'll get some more practice, then you'll realize कि बाज़ दफ़ा चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप बहुत सिंपल कंडीशन से भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन sometimes it's necessary, so it's there for the sake of completion. ठीक है? Okay, what do we need to talk about next? हमने एक बहुत शुरू में एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर हम आपको बता रहे थे कि we can have a block of code that is run forever or some n number of times. So forever was this block that we used in Scratch. Adil, you're right, लेकिन अब मैं क्योंकि loops पे आ रहा था तो इसलिए I didn't want to have that the code. But you're right. I have all of this code backed up. I will try and upload the relevant code after the class. ठीक है? Okay, so हमने एक block of code देखा था Scratch में जिसके अंदर we said कि do this forever. So the first example of this in what we will do in this class is something called a while loop. ठीक है? अब while loop का क्या syntax होता है? While loop का syntax ये होता है कि आप लिखते हैं while और इस ब्रैकेट में आपने कोई कंडीशन लिखनी होती है और जब तक ये कंडीशन ट्रू है द प्रोग्राम विल कीप ऑन रनिंग दिस स्टेटमेंट. सो फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू सॉर्ट ऑफ कीप ऑन नॉकिंग अ नेल इन द वॉल आई विल से कि व्हाइल द नेल इज नॉट इन कीप डूइंग व्हाटएवर इज इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस. So ये जो दो कर्ली ब्रेसेस के दौरान जितने भी स्टेटमेंट होंगे they will keep on getting repeated while this condition. So if I want an infinite loop, if I want something to run forever, what I would say is so इसका syntax इस तरह होता है कि while के अंदर आप आके statements लिख सकते हैं and what you can say is cout hello and what I'm saying is keep on doing this while this condition. So you can actually give a condition here. And very similar to the conditions that we did for if else, they can say if I say while 1, what that while true या 1 दोनों सूरतों में what I'm saying is this condition will always evaluate true, therefore this is an infinite loop. This program will keep on running hello because this condition will always be true. This is called an infinite loop. So while true, keep on doing this, which means कि इधर आके कंडीशन चेक करो तो वो क्या करेगा, पहली दफा इधर आएगा कंडीशन चेक करेगा, वो कहेगा यस कंडीशन इज ट्रू, आके इसको प्रिंट करेगा, फिर यहाँ जाएगा वापस व्हाइल पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, इट्स ट्रू, विल प्रिंट अगेन एंड इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग ओवर एंड ओवर अगेन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अच्छा ट्रू इज ऑलवेज ट्रू as far as so if I say while 1 this is always true. Remember हमने कहा था शुरू में एक डेटा टाइप होती है boolean. Boolean can either be true or false. True is 1, false is 0. So when I say while 0 and I run this program, the program does nothing because this condition will never be true and it will never print this. Lekin if I say while 1, this means that this condition will always be true. And if I run this program, my computer will go mad because it will keep on printing hello over and over again because ये line 12 पे जो condition है will always be true. So ये जो forever वाला block था ये हमने एक ज़माने में इस्तेमाल किया था Scratch में, इसका equivalent ये है कि हम लिखते हैं while true. अच्छा इसमें दो चीज़ें important है, एक तो ये है कि यहाँ एक condition है और एक block of code है. इस block of code में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. मैं इसके अंदर multiple lines डाल सकता हूँ. ये वही if else वाला है कि all of this is all or nothing. या ये पूरा ब्लॉक चलेगा या ये पूरा नहीं चलेगा. So all of these statements will now, so it will print hello Fareed Zafar C has 100, it will keep on saying this over and over again and it will go mad. ठीक है. Now what does this tell me? This tells me this is one contiguous block of code. It also tells me that I have a way of putting something here which will be checked every time this loop is run. So you remember वो जो nail वाला concept था कि वो एक दफा nail को hammer करता है, which means एक दफा इस पूरे block को code को चलाता है, उसके बाद वापस line 12 पे चला जाता है, फिर check करता है. वो check क्या था? Is the nail all the way in? यहाँ this will always be true. It will keep on doing this. लेकिन this kind of suggests कि अगर मैंने ये loop बनाना हो कि I want something repeated 50 times.
So I can do this using this condition that I have. And the way to do this is कि मैं counter बनाता हूँ. Counter एक मैं variable बनाता हूँ. इसका नाम मैं कोई भी दे सकता हूँ. यहाँ हमने इसको counter कह दिया. It could be A, B, C, D, whatever. और मैं उसका variable 0 दे देता हूँ. और फिर मैं कहता हूँ कि while the counter is less than 50, keep on doing this. While the counter is less than 50, print hello. And then what I need to do is every time I do the loop once, I add the counter, increase the value of counter. I is equal to I plus 1. This is something that's going to run 50 times. क्योंकि होगा ये कि मैंने क्या किया है, I've integer counter is equal to 0. और मैं ये चेक कर रहा हूँ, condition क्या चेक कर रहा हूँ? While counter is less than 50, see out hello. Okay. And what will happen is it will do this once, and then I'm saying counter is equal to counter plus 1. So the first time, what happens? The first time when you come to this line, counter ki value is 0. Wo check karega, is 0 less than 50? Yes. It will go here, print this, and then counter की value हो जाएगी 1. The loop will go back to line 15. अब वो check करेगा, is 1 less than 50? Yes. It will go and it will keep on going, and every time it will keep on increasing the value of counter till the value of counter becomes 50. When it becomes 50, it will go back here and it will say, is 50 less than 50? No. And at that point, it will break out of the loop and go to line 22. And that will be the end of the program. So you remember कि मैंने repeat 50 वाला जो syntax दिया था, वो syntax यहाँ हो गया है कि मैंने एक variable बनाया, उस variable को condition में डाला, और हर iteration पे उस variable को increase किया by 1. Yes, we can write this counter plus as this is the exact same syntax. And this is actually, by the way, one of the biggest mistakes that people make. They don't change the value of the counter inside the loop. So this is increment the counter. So now what will happen is, this is the condition part. Condition क्या है कि if counter is less 50, नहीं इसको 10 कर लेते हैं. So now this loop will run 10 times. It will print hello Fareed Zafar CS 110 times. Every time counter की value वो बढ़ाता जाएगा. And I can actually do this. So मैं इसको करके देख लेता हूँ. If I run this program, it will print the thing 10 times. And then it exits. Actually, we can do something better. We can actually not do endl every time, and we can see all of the outputs on one line. And okay. And this, what we'll do is, it'll print 10 lines on the screen that you can see. Now, how do I know these are 10 lines? I can actually print the counter key value as well. And every time it's in the loop, it'll print the counter. So the first time it goes in the loop, the value of counter will be 0. And then, so ये देखें, पहली दफा आया, counter 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9. When the value of counter is 9, it comes here, and then it says counter plus plus. ये आखिरी दफा जब आएगा तो counter की value 10 हो जाएगी. जब वो दोबारा चेक करेगा तो 10 is not less than 10, and therefore it will say, okay, I'm done here, and it will directly drop to line 20. So उस दफा ये print नहीं करेगा. This is something which is called a while loop, and if you look at any programming language, Python होगी, C++ होगी, Java होगी, pick anything. This programming syntax while loop is ubiquitous. There are other ways of writing these loops, but today we'll only talk about while loops, because anything that you can do with for loops or do while loops, you can do with while loops. So if you get this done, that's actually 70% of this course. If you understand how to use Rafe, question.
सर वो ना एक क्वेश्चन था कि असाइनमेंट में भी ना हमने एक लूप 10 दफा रिपीट करवाना था, तो मैंने जी अ, उसको 1 से इनिशिएट करा के 11 तक लेके गया, तो मतलब इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग आई टू बी 0, या तो इज इट अ गुड हैबिट या फिर हमें मतलब 0 ही रखना चाहिए मोस्ट ऑफ नहीं नहीं नहीं, ये इंटायरली आप पे है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप वन से let's say आप वन से शुरू कराते हैं और यहाँ आप कंडीशन और चेक कर 11 रहे हैं तक। लेस देन 10, नाउ दिस प्रोग्राम विल रन ओनली 9 टाइम्स because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and you can, so you need to be aware कि जीरो से शुरू करना है तो लेस देन चल जाएगा, लेकिन अगर वन से शुरू करना है तो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है? और या फिर आप Because लेस देन 11 कर सकते हो। yeah. So देखिए ना, this loop ran 10 times from 1 to 10 and what I ओके, did सो was I started लेस at देन 1. इक्वल टू बेहतर है। हाँ, नहीं नहीं, बेहतर बेहतर कोई नहीं है एक्चुअली। जो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो जीरो वाला बेहतर है, क्योंकि जीरो का कंपैरिजन जो होता है वो आसान होता है, फास्टर होता है स्लाइटली, बट ये आप लोगों के बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स के कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। एसेंशियली ऑल यू नीड टू नो इज कि आपका काउंटर शुरू कहाँ से हो रहा है एंड कितनी दफा उसको आपने रन करना है। स्क्रैच में ये आसान था, यू सिंपली नीडेड टू राइट 50 हियर, बट हियर यू नीड टू नो कि ये आपने वेरिएबल सही चेक किया है, कंडीशन सही डाली है, और वेरिएबल को लूप की बॉडी में आपने चेंज भी किया है। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू वर टू comment this line out, what will happen now? Anyone? सर इंफिनिटी टाइम Exactly. So if I don't change the counter, इसका मतलब counter 1 से शुरू होगा and it will never change. Therefore, this condition will always be true. Therefore, the program will go into an infinite loop and it will keep on doing what it. So, and that's a problem. You didn't want to do that. So this is actually a very, very big mistake. Is sometimes people don't update the counter. So किसी भी loop में दो तीन चीजें होती हैं. Condition क्या check करनी है? How many times do you want it to run? And are you incrementing the loop variable? This, by the way, is called the loop variable. और आपने अगर काउंटर को लूप वेरिएबल के तौर पे यूज करना है, बाय द वे इसका नाम काउंटर होना जरूरी नहीं है, इसका नाम आई ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ये आप पे है। अगर आप मसलन अगर आप मेरा कभी कोड पढ़े हुए तो एवरी वेरिएबल इज एन आई, लेकिन यू नो यू वांट थिंग्स दैट एक्चुअली मेक सेंस एंड दिस ओके दिस इज अ मिस्टेक। सो अगर मैं आई यूज कर रहा हूं तो दैट्स आल्सो फाइन। सो काउंटर इज नो, देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट द वेरिएबल नेम काउंटर, it's not a reserved word, लेकिन you need to sort of make sure कि condition आपने appropriate रखी हो, you need to know कि आप उसको increment कर रहे हैं, and this is your very first loop, counter plus plus counter 0. Now what I want you guys to do now is to, so you remember this algorithm that we wrote the first time. We said k takes a positive integer from the user and computes the sum of all positive integers smaller than or equal to the number entered by the user. The question is straightforward, right? So what I'm going to do is I'm going to leave this code onto the screen and I want you to write this code. This is the question. If there are any sort of confusions here, you can ask. Otherwise, I'm going to leave this code on the screen and I want you to write the program that allows me to add all positive numbers greater than so less than a number that is input from the user. आप user से एक number लेंगे n या जो भी and add all the numbers less than n. अगर कोई confusion है तो पूछ लें, otherwise take out or go to online GDB and start writing this code. If there are any questions